हाय, दिस इज समीना शेख हियर ऑन जूम चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो करप्ट है या उसे सुधारने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो जॉइन मी आज आई वेलकम द पाताल लुक टीम ओनली ऑन जूम चैनल। लवली टू हैव ऑल ऑफ यू, ऑल द थ्री। और जयदीप, एज आई कुड सी योर रोल इन द एंटायर, आपने पहले भी लास्ट टाइम में एक डायलॉग बोला था सिस्टम की वजह से, इट्स ऑल अबाउट द सिस्टम, के सिस्टम में ही खराबी होती है। और इस बार भी आप यही कोशिश कर रहे हो कि सिस्टम को आप फिक्स करें। इस बार की जर्नी कैसे रही? काफ़ी खतरनाक लग रही है। नहीं, बिल्कुल खतरनाक रही है। नई जगह पे पहुंच गया है, थोड़ा सा बहुत ही अनजान है उसके लिए वो पूरा इलाका, पूरे लोग बहुत अनजान है। तो डेफिनेटली वो एक नई जर्नी पे है, एक नई लड़ाई पे है। और पिछली बार भी किसी ने बोला था आतेराम को कि ये जो सिस्टम है ये एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह है। बाहर से देखने पे लगता है कि थोड़ा टूटा फूटा है, जर्जर है, लेकिन अंदर सब पुर्जे अच्छे से काम कर रहे हैं। और जब कोई पुर्जा खराब होता है तो मशीन नहीं बदली जाती, पुर्जा बदला जाता है। तो यहाँ भी कोई और उसको बता रहा है कि ये ठीक नहीं है जो तू कर रहा है, बढ़ेगा। बट वो अपनी जर्नी पे, उसने ना उस वक्त सुनी थी ना इस टाइम सुनने वाला है। उसको पता है कि उसको सच ढूंढना है। और जब तक आप उसमें नहीं उतरोगे, उसके गटर में, तो कीचड़ वहाँ से बाहर निकाल नहीं पाओगे। तो या दैट्स आतिराम, इट्स वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर हिम। The look is also a bit developed and established, as the character. If you see the persona, completely. थोड़ा सा bulked up है, look थोड़ा सा different लग रहा है, थोड़ा haggard भी लग रहा है because he's too lost in what he has been through already. Plus, it's not only the corruption what you're trying to figure out. It's also fighting the people you have worked with closely and taking over the positions. So how that it has been for Hathiram? वेल वो तो अगेन जो पेपर पे है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस संदर्भ में। बट ये बिल्कुल सही कहा आपने कि वो उसकी जीवन, सबका ही जीवन आगे बढ़ गया है। सबके जीवन में 2-2.5 साल बीत चुके हैं पिछली घटना से लेके अब तक। और वो 2-2.5 साल में जो ठहराव आया होगा वो उसके अंदर है। परिवार की तरफ से जो उसको मिल रहा था या अब मिल रहा है, उसमें बदलाव आ गया है हल्का सा। जो लोग जानते हैं उसको उस पुलिस स्टेशन में, वो उसको बेटर समझने लगे हैं। तो उस फ्रंट पे इज मच मोर सॉर्टेड नाउ। पर बाहर की दुनिया में वैसा ही है, वो उसी कुर्सी पे बैठता है। ऐसा कुछ नहीं बदल गया कि लास्ट जो केस उसने सॉल्व किया तो उसमें कुछ बदलाव आ गया हो, क्योंकि जो हुआ वो किसी को पता नहीं है। वो अभी भी उसी को पता है बस कि हुआ क्या था। बाहरी दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसको सच पता चल गया, पर उसको फर्क पड़ता है, उसके अपने जीवन पे फर्क पड़ता है। और जो बहुत करीबी लोग हैं उनके ऊपर फर्क पड़ता है, जिसमें परिवार आता है, वाइफ आती है, बेटा आता है। तो वो भी एक जर्नी देख पाओगे आप इस बार। और जो करीबी लोग हैं जो उस पुलिस स्टेशन में है, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो भी 2-2.5 साल आगे बढ़ गया है। तो वो जर्नी भी देख पाओगे। और एज ए ह्यूमन बीइंग वो किस हद तक सॉर्टेड हो चुका है, वो भी कहीं न कहीं आई थिंक पहुंच जाएगी बात। कोशिश की है हमने उसको दिखाने की। पर कहानी तभी बनेगी जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा जीवन में दोबारा से। तो ये वो बेटर बता पाएंगे जिन्होंने इस कहानी को लिखा है और जिस तरह से वो मोड़ दिया है। मुझे खाली ये था कि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत सुकून भरा इसलिए था कि चाहे कितना ही लड़ा हो वो सीजन 1 में, वो लड़ाई छोटी लगने लगती है जब आप सीजन 2 में पहुंचते हो। तो मैं इस बात से बहुत खुश था और मुझे आई होप कि वो हमने उस तरह से कोशिश करके वहां पहुंचाया गया तो पहुंचेगा जरूर। Tilotam, after you the question comes कि इस बार आपकी खोज में क्या आपको मिला है? और पाताल लुक में काम करते वक्त, like of course like with the team and all, how the experience has been for you? हीरे मिले इस जीवन में। Absolutely. It's been wonderful. I have made some really good friends. And I know that this is something, what I've got from this project is will sustain me for a much longer time because of the friendships I've made. Also there's a saying in Bengali, I don't know, Alpo bitta bhayankari, which is that when you have very little knowledge of something, it's scary. And I remember when I read
the script for the first time, and the first scene that Meghna has in the show, where she meets these officers from Delhi, and I felt that this is such an interesting predicament. A, she's a woman, and so there's the casual sexism of being a female police officer in a very male-dominated world, but also the idea of her feeling that these men don't know this place very well, you know, that they have very little knowledge, but little knowledge also makes you very arrogant, you know, because you don't know the whole picture, but you feel you know it because you're from Delhi, you know, you're from, and that how it starts, that relationship between Hathiram Ansari coming to Nagaland and with the characters from Nagaland, the you know, the head-on, the collision that happens between them, that I understood, but how the pieces from that collision would fall and what would come together, how the journey, you know, of Meghna's character and of these two cops from Delhi coming to this new world, how the piece, I know that there was a, you could feel the impact of it in the, you know, very first reading, but where these pieces will fall was a surprise even for me as I was reading it, you know, how are these so many moving pieces, how are they going to scatter and then like Terminator come together, you know, and what's going to happen? Yeah. So that was very, very exciting. That was very exciting for me. Yeah. What about you, Sudeep? Like, you know, creating something like Patal Lok 2, and everyone was looking forward to this. The way it ended, the way the entire situation was between Hathiram and Abhishek Banerjee, you know, who was playing the role, and how it ended completely too, you know, versus coming to this one. How, what unfolds in season 2 for you? Season 2 is it's really Hathiram's journey forward. It's what we did in season 1, what he did in season 1 is done and dusted. So, you know, he has moved on from there. He's carrying the scars of the first season. He's carrying the learnings from the first season. It has changed him as a person a little bit. It has made him probably a little more defeated or a little more accepting of things. It has also made him calmer, but he still carries the same doggedness inside him that he had, the same resilience that he had, and it is that force of character that he brings to the second season, and it's a new case, a new story, and through starting with Hathiram's and Ansari's eyes, we enter this new world entirely that we have created in second season, and the story moves to a new territory in Nagaland, a very different one from the first season, with all the complexities and all the moral dilemmas that you know that will come to them. Okay. Coming back to you also, Jaideep, like I've seen the kind of roles you have done, you know, so far. You completely get into that character. Like when I was watching Patal Lok, it kind of, you know, stayed with me, and you know, it was like kind of growing on me, and I was like having like weird thoughts, like, oh, something like this happens, and you kind of connect to the real life also so many times, you know, what happens in shows, the corruption, the system and all. How many times you have exhausted yourself while playing certain characters, and if one character of yours which has literally, like, you know, taken away from you everything? I don't know, वो मुझे लगता है कि वो दोनों के ऊपर इम्पैक्ट होता है। जब आप कुछ कर रहे होते हो, जब कुछ अच्छा लिखा होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। एज अ इवन एफ एज अ रीडर यू आर डूइंग दैट। आप एक कहानी कोई पढ़ते हो, जबकि आपको उसको कोई करना नहीं है, उसको आपको शूट नहीं करना है, बट उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है एज अ ह्यूमन बीइंग। और आई एम श्योर उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब आप एक एक्टर होते हो, और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब आप उसको परफॉर्म करने वाले होते हो। तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ तो आपके अंदर बदलाव देता है। वो बाहरी तौर पे शायद दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से वो आपको वो चीज़ें एटलीस्ट उस वक्त तो ज़रूर महसूस हो रही होती हैं। तो ऐसे ही कुछ किरदार आपको कुछ दे के चले जाते हैं और आप उनसे कुछ लेके चले जाते, आपसे कुछ वो लेके चले जाते हैं। एग्जॉस्ट होना, आई वुड से एग्जॉस्ट, बट पर उसका इफेक्ट जरूर होता है आपके जीवन पे।
कैसे कैसे इसको भारी there is a होता है, change कुछ of कुछ दिन nature भारी होते हैं basically? आपके लिए, कुछ अच्छा। कुछ दिन भारी होते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली हो। और जब आप वापस पहुंचते हो अपने घर में या होटल के रूम में, तो आपको वो छोटी छोटी चीज़ें याद आ रही होती हैं। जब आप वो कर रहे थे, क्या वो सही गया, नहीं गया, और उसका जब आप कर रहे थे आपके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा था या नहीं हो रहा था। पर आपका दिमाग मोस्टली इस उसमें रहता है कि आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, बट कोशिश ये रहती है कि आपको वो इफेक्ट ना करे, क्योंकि फिर उससे बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, समीकरण बदल जाते हैं चीज़ों के। बट आप ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते उसका, और वो आपके साथ थोड़ा बहुत चिपक लेता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। एक दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक दिन मैं और तिलोत्तमा कुछ तो बात कर रहे थे और सडनली वो स्किप हुआ मेरे दिमाग में। मैं बगल में सुदीप भाई का कमरा था, हम दार्जिलिंग में कहीं थे, और मुझे इन्होंने कुछ बोला और मुझे बीच का एक हिस्सा गायब हो गया। ऐसे होता ना कि मेमोरी से कि यार हमने वो तो शूट किया ही नहीं। एंड आई जस्ट रन डाउन टुवर्ड्स हिज रूम एंड नॉट, बने का भाई वो नहीं हुआ, नहीं हुआ है। एंड आई वाज लाइक, माय पैल्पिटेशन वाज लाइक व्हाट द हेल, ये कहाँ गया, बीच का हिस्सा कहाँ गया। इट्स नॉट बिकॉज कि You got too involved in हाँ, आपका दिमाग, आपका वो जो भी कह लो, दिल दिमाग, जो भी शब्द दिल हो, आप उसके अंदर इतने इन्वॉल्व होते हो कि आपको वो हर छोटी चीज भी बॉदर करने लगती है, जो कि शायद बाहर की दुनिया में कोई बोले कि पागल हो गए क्या चल रहा है ये। बट मुझे थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ पैर कांप गए थे, और जब उन्होंने बोला नहीं देखो वो ये वहां किया था, वो थैंक गॉड, आई वेंट बैक एंड अगेन हमने चाय पीना शुरू किया। मैं सडनली सब कुछ छोड़ के भागा हूं। सो दैट्स हाउ इट अफेक्ट्स योर लाइफ, कि आप सडनली कुछ अजीब सपने आने लगते हैं, अजीब अजीब से, और फिर आपको लगता है कि ये क्यों हुआ। फिर आप अपने ही खुद का दिमाग चलाते हो, इसका कनेक्शन कहाँ होगा। बट इट्स नॉट एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग इज अ लिटिल नेगेटिव वर्ड, इट्स लाइक it's all the more like आपको वो नरिश कर रहा होता है, overwhelming in a way. नरिश कर रहा होता है। Coming to you, Tilottama, like as you said, like the sexism exists, when it comes to female, doing a certain role, or say, playing a cop, which is way too senior also. It happens, even in the industry, or even, at any workplace also where you go, that if she is the one, trying to, taking the charge of things, she's the one who's dominant, and there are many, colleagues who are not even okay to work under a situation like that. How many times have you also faced that, in terms of roles also, of letting go of roles because of this kind of differentiation which takes place? It's rare to find a well-written part for a woman, but that's a given. It's never been different, so one's not crying over something that was like, oh, as if we lost some paradise and things are so bad now. It's always rare, but I've made my peace with that it will be far and few. But when they come, what they give you will keep me going till the next one comes. That's my theorem in my life. Yeah. So to basically make sense of the insanity you feel when you observe and you're a human being, you see what's happening around you. It's not just about you facing sexism, right? It's just the inequality that exists around you beyond gender. But when that is represented in films, especially when you see that the needle has moved a little bit in the representation of men in cinema, then you get a bit like feeling a bit left out. That arey yaar, if we are writing characters like Hathi Ram for men, come on, So it was very, I don't know what the word is, but I felt very vindicated to read a script like Patal Lok, where not much is made about the fact that she is a woman with a certain amount of power because of her uniform and her position and where she's come from, unlike Hathi Ram through the IAS route, But the joy of playing someone like her, where her power is so understated and given, and not a big deal is made of it. That, oh my God, a woman is a police officer. Oh my God, but that's in the writing of the whole show. Nothing is so underlined that it starts feeling like
thank you, Sudeep, for representing women so well. Like you made us feel so seen and heard, and we've never seen women characters like that. It's not that kind of that kind of pedestalizing and underlining. It's done with a certain sense of ease, but which is why it makes you feel more uncomfortable. To both, ever since like OTT has taken the lead in a way, because of course theatres is also there, and now we have again gotten back to theatres. A lot of movies, kind of, maybe get overshadowed because OTT is the presence, and there are chances of me just moving, from one app to another app. As an actor, to both of you, what are the challenges you have faced, in this, in this 4 years of time when it comes to the characters you have played, be it on OTT or in movies otherwise? Because right now also what the challenge we are facing is the box office, concerns, or the kind of films which are coming, if the content is attracting the audience or no. 2025 we are here on, and already the debates are happening regarding these conversations. So what are your thoughts on that? As actors, what pressures and challenges you deal with? आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा अनटिल अनलेस आप मतलब मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मुझे थिएटर में 100 करोड़ किसी को लेके आने के लिए अभी तक वो उस कंडीशन पे किसी ने रखा नहीं है कि आपके कंधे पे ये फिल्म है और आपकी जिम्मेदारी है कि इसके 100 करोड़ कमाए जाएं। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे एक्टर्स हैं इस दौर में इस माहौल के जो इस बात को सोचते होंगे। पर डेफिनेटली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ तो वो नहीं हो ना, मैं सोचता हूँ उस तरह से। मेरा काम है कि जो कहानी मेरे पास आई है, जो किरदार मेरे पास आया, ऐसा कई बार हुआ है कि कोई कुछ काम हुआ है जो बना था थिएटर के लिए लेकिन अब वो OTT पे आ रहा है, तो बट उसका आपसे कुछ लेना देना है नहीं। आप प्रेशर लेके भी क्या ही कर लोगे कि अरे यार तुमने बोला था ये थिएटर में रिलीज होगी, अभी OTT पे आ रही है। आई कांट डू। मैंने जो काम करना था वो OTT होता है या सिनेमा होता, दोनों में वही करना था। करेक्ट। तो आई थिंक वो प्रेशर लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप कोई ले भी रहा है तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। अनटिल अनलेस आप ऑलरेडी उस पेडेस्टल पे खड़े हैं जहां आपके ऊपर ये है कि अरे पिछली फिल्म तो आपने 200 करोड़ कमा के दी थी, अब की बार 300 होनी चाहिए। तो पर्सनली आई डोंट गो इनटू दैट जोन ओनली, सोचता ही नहीं। What about you? I mean the question has no relevance for me at all. It's like also saying But basically that pressure of content basically in current times, because what is happening is there's a lot of content on even social media, then there is OTT, then there is otherwise like box office. In that manner, many a times the content what we are seeing is not attracting to a lot of people in the audience, when I say that, following which the actors literally also have to face the backlash of what they are delivering. That way, does that get concerning for you also, like, oh my god, like what's next? Is there a sense of concern of where we are going as an industry? Yes, I think that's a shared concern, what the future looks like. But as an individual, I've never even thought of my work in this way. It's too limiting and it's too reductive to think of your work from, like, do you change your performance when it's a wide shot as opposed to a close-up? As an actor, my entire body is performing right now. Whether the camera wants to catch just the lobe of my ear, or a part of my face, or my entire body. So I think whether you're performing for OTT or for theatrical, as an actor, your relationship to your craft and the story doesn't change a bit. So why would I be concerned with? नहीं आ सकता हूँ प्रेशर। अगर कल को मेरी कोई फिल्म थिएटर में रिलीज हो और वो 50 करोड़ कमा जाए, डेफिनेटली प्रेशर आएगा कि अगली फिल्म उससे ऊपर जानी चाहिए। कोई फिल्म 100 करोड़ कमा जाए, Correct. वो आएगा। मुझे लगता है अभी तक वो है, तो अभी मैं तो उस जोन में नहीं हूँ कम से कम। Yeah, lastly to you, Sudeep, also, as we see OTT, more so when the genre what we're exploring the most, even in theatres right now, movies which are more violent or shows the violent side of, cinema is appreciated the most. Though it leaves a different nerve altogether to, people having an impact on it, like see even a Marco or an Animal.
the impact of such cinema is rising higher as compared to what the family dramas or comedy films used to be. Are you also kind of focusing your kind of cinema on that side of it, showing more of the negative elements? Yes. Joking. No, not at all. Not at all. I'm just trying to tell a story. When you're trying to tell a story, you're not thinking of. It's a story that you are feeling at this point of time, and you're feeling like saying at this point of time and sharing with the larger world, rather than, oh, ये चल रहा है तो मैं ये बनाता हूँ. I've never, I would have been a much richer man if I could think like that. But no, to answer your question, no. Lastly, what are your upcoming projects you're focusing on after Patal Lok? पाताल लोक सिंगल एजेंडा है मेरा भी. What about you? I think I'll again watch this, binge watch. I've done that last time also. And the only thing is Yes, I'll need please a do break that. after that. What about you? I'm really like this. I mean, the shooting of this show for me was really a gear shift. In many ways, you wait for a script to come to you, which comes only at a certain stage in your life. Where you're waited long enough. So when it comes to you, there's such a sense of excitement and joy that you could see that milestone in your life as something that so this is really. And Patal Lok ke shoot ke baad I went on to do another film, and I think because of how wonderful the shoot of Patal Lok was and how enriched I felt by it changed the way I entered the other film. And I think a lot of the blessings of Patal Lok just went into that film because I was a happier actor, So the other film, had met a different Tillotama when they signed me on, and then after Patal Lok, they're like, oh my God, this is a new Tillotama, and we are very happy to have her on set because I think that's what it. And so I feel like my life has come to a place of there's a sense of ease. Yeah. You've always felt that you were vibrating at a certain frequency that no one heard, and that was okay too. But it's nice to find a few people in their mid-40s who can hear that frequency and talk to that frequency, and you can also work together as part of something that you really like. It's very rare. Yeah. So. What about you, Sudeep? After Patal Lok? There is something else that I'm working on, but like they were saying, this is something very close to the hearts of all of us, and it's taken a lot of effort, taken a lot of blood, sweat and tears. It's 4.5 years of very, very hard work put in by a lot of people, the entire team. So yeah, right now I'm just grateful that it's finally coming out and is there to be shared with the world. So thank you so much for your lovely time. I'm looking forward to see a lot of memes also again on social media regarding Patal Lok, which gets converted into memes. I'm sure there would be some dialogues which will be again making noise. Thank you so much for your lovely time and all the very best.